All the information shared in this video is available on the public platform. Nothing is discussed here which may breach the confidentiality of our armed forces. Defense Detective respects our defense forces and works only on the information that is available for public use. Hello friends, welcome to another episode of Defense Detective Global. In this episode of our war series, we will talk about the 1965 war between India and Pakistan. We have already covered the 1971 and 1947-48 wars. The links are given in the description box. You can watch those videos by clicking on the links. Today's video is dedicated to the War of 1965. When talking about the War of 1965, the Pakistanis feel proud that their country destroyed Indian tanks and they won. So today the Pakistanis should see the real story of their losing the War of 1965 that we are going to show you with full evidence. There will not be a single Indian in the video who speaks about the war. They are either high-profile Pakistanis or foreign experts. Pakistanis say it repeatedly that foreign media, foreign newspapers and foreign experts have said that Pakistan won this war. So in this video, you will also see foreign experts saying that it was in fact India who won the 1965 war. Apart from the question that who won the war, there's a bigger question that who started the war. Most of the people of Pakistan say that India attacked them in the war of 1965 because they have been taught this false propaganda since childhood. So Pakistani viewers should watch and listen carefully to what their own experts, their fellow Pakistanis are saying. And let us tell you that these are not common Pakistani citizens talking. They have held high positions in Pakistan Army, Air Force and government. 65 की लड़ाई में ये खबरें भी आई कि आपका ये ख्याल था कि 65 की जंग हमने नहीं, भारत ने नहीं बल्कि हमने शुरू की. ये सारी जो तारीख रही, ये क्या रही तारीख पाकिस्तान की? हकीकत है हमने 65 की जंग में हिंदुस्तान की फ़ौज ने हमला नहीं किया. 65 की जंग में हिंदुस्तान की फ़ौज ने हमला नहीं किया. Pakistanis say it repeatedly that we did not start the attack and India started the war. So now you have listened that who started the war of 1965. And the person who said this was a renowned person. His name was Air Marshal Asghar Khan. He became the chief of the Pakistan Air Force at the age of 36. He passed away in the year 2018. Listen again carefully to what he said. He said that the war of 1965 was not started by India but by Pakistan. 65 की जंग में हिंदुस्तान की फ़ौज ने हमला नहीं किया. 65 की जंग में हिंदुस्तान की फ़ौज ने हमला नहीं किया. Not just Air Marshal Asghar Khan, but also Air Marshal Noor Khan, Dr. Mubarak Ali, who is one of the great historians of Pakistan, and senior journalist Najam Sethi have also said that the war of 1965 was not started by India but by Pakistan. I mean, after Gibraltar, what else could the Indians do? They were defending themselves. We were not defending, we were the aggressor. We were the people who intruded, into Kashmir. And of course, as a reaction, then India invaded Pakistan. 1965 की जंग आ जाती. 1965 की जंग के अंदर जो नेचुरली बहुत से टॉक शोज में भी ये बात होती है कि जी एक तो ये कि दोबारा हम पर जंग मुसल्लत की गई और ये कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती. देखिए ऐसे नहीं हुआ. अगेन जो हकीकत थी और हकायक थे वो फर्क थे. तो आपने ये बंदे भेज दिए जो कि प्रिटेंड ये कर रहे थे कि ये कश्मीरी हैं, यूनिफॉर्म्स नहीं पहने हुए थे और लगते भी कश्मीरी थे. आपने ये भेज दिए और आपका ख्याल था वहां थोड़ी बहुत इंसर्जेंसी क्रिएट की जाए. मैं सिर्फ आपको वो प्रूफ देता हूँ, वो एविडेंस देता हूँ जो खुद सरकारी सतह पे अनचैलेंजेबल है, जिसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता कि ये गलत है. जी. फील्ड मार्शल अयूब खान जो थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जी, उनकी डायरीज जो हैं, उनके अपने बेटे ने गौहर अयूब ने जो है उनकी डायरीज से इक्तसाबात जो हैं अपनी यादाश्तों में उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जी, उसमें उन्होंने पेश किए हैं जी. और उसमें उन्होंने एक बहुत मज़े की बात ये लिखी है कि अयूब खान को मिसगाइड किया गया 1965 में, जिस वजह से ये वार हुई. कश्मीर के अंदर ये इंटरवेंशन की जो कि आर्म्ड इंटरवेंशन है. ठीक है, आपकी रेगुलर आर्मी वहाँ पे दाखिल हुई जी. उसके बाद वो जब फेल हो गया तो आपने दूसरा ऑपरेशन ग्रांड सलाम के नाम पे वहाँ पे जो है वो दूसरा ऑपरेशन किया. इसके जवाब में फिर जो है लाल बहादुर शास्त्री ने
ऐलान किया कि जी हम जो है पाकिस्तान पे हमला करेंगे। Though we Indians follow the principle of live and let live, we have never initiated an attack on anyone. But this does not mean that the other person will attack and we will remain silent. Earlier, Pakistan was defeated in the war that took place in 1948. We have earlier made a video on it. You can find its link in the description box. There's a popular proverb that a burnt child dreads the fire, or once bitten, twice shy. But seems like Pakistan hasn't heard these proverbs. Because after its defeat in 1948 war, Pakistan did not learn a lesson and started a war again in 1965. But it had the same old planning. It sent its army soldiers with the Mujahideen. If you don't believe it, you can see this evidence. In the war of 1965, this Pakistani captain, along with his fellow men, was captured by Indian army. He told everything to Indian army. What's your name? Ghulam Hussain. Rank? Captain. Number? ACO 780. What's your unit? 8 AK Infantry Battalion. How many regular chaps were there in the company? Well, every company had 43 people from army and 66 mujahids. Did you do training together with the mujahids? Yes. Many Pakistani soldiers were arrested like him. They were prisoners of war who were given respect by India and later returned to Pakistan. Anyway, let's move ahead. And let's talk about the so-called best planning of Pakistan Army in the war of 1965. When Ayub Khan sent an army with a tank battalion to Jammu and Kashmir, Air Marshal Asghar Khan went to Ayub Khan and told him that he has attacked Akhnur and now India will react in Punjab. This is something quite obvious. You know what Ayub Khan's answer was? It was hilarious. मैंने कहा जी आपने फैसला कर लिया हिंदुस्तान के साथ? उसने कहा कि उन्होंने कहा कि किसने कहा तुम्हें? मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं कहा, मगर आपने टैंक भेजे हैं, आमद भेजा है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जम्मू के पीछे, अखनूर के पीछे, इंडिया रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करेगा पंजाब में। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई इम्कान नहीं है। मुझे नहीं इल्म कि क्या उनकी मालूमात थी, क्या असेसमेंट थी, मगर ये अहमखाना सोच थी मेरे ख्याल के मुताबिक कि हम ये कार्रवाई करेंगे, इंडिया रिएक्ट नहीं करेगा। तो मैंने कहा रिएक्ट करेगा। और ये भी किया कि सुना है कि फ़ौज ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने छुट्टियों से भी लोगों को वापस नहीं बुलाया था पंजाब में, ताकि इंडिया प्रोवोक ना हो, वो ना समझे कोई तैयारी कर रहे हैं रिएक्ट करने की। तो ये पहले दर्जे की हमाकत थी। तो ये जंग हमने शुरू की, इसमें कोई शक नहीं, हमने जवाज़ पैदा किया, इंडिया हमला करे। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान बच गया। In the war of 1965, Air Force command was in the hands of Air Marshal Noor Khan. Air Marshal Noor Khan passed away in 2011, but before that, he gave an interview to the Pakistani news channel Dawn News, in which he clearly said that Pakistan had acted stupidly by attacking India. The army was not ready to fight at all. In fact, there was no planning at all. To me, it was an absolute absurdity that the way they were saying that they're not expecting a war and are they prepared for war? They were not at all prepared for war. And my immediate reaction was that I should resign in protest at the absurdity. And the army was not geared to fight. They were on a peacetime basis. They were still not, the whole army was not informed. Of course, Navy and the Air Force were not. Air Marshal Noor Khan ne jab kaha, the army had planned Operation Gibraltar for self-glory rather than in the national interest. It was a wrong war and they misled the nation with a big lie that India rather than Pakistan had provoked the war and that we were the victims of Indian aggression. It was an unnecessary war. कि जी वजारत ख़ारजा ने हमें ब्रीफिंग दी थी कि आप कश्मीर में जो मर्ज़ी कर लें, इंडिया जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन ये किसी भी बंदे की समझ में नहीं आता कि आप किसी मुल्क के अंदर इतने मसल्ला किस्म की इंटरफेरेंस करते हैं तो वो आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों नहीं क्रॉस करेगा जी। इस पे असगर खान ने भी जो है उन्होंने लिखा भी है और कहा भी है बार बार कि मुझे भी हैरत हुई। मैंने अयूब खान से पूछा कि आप ये कैसे समझ रहे कि जी वो ऐसे नहीं करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे? जब आपने हमला कर दिया, आपने ये सारे मामला, तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों नहीं क्रॉस करेंगे? उन्होंने कहा जी पता नहीं भुट्टो साहब ने हमें कहा है कि नहीं क्रॉस करेंगे, जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे। तो मैं समझता हूँ मुमकिन है ये भुट्टो साहब के सर डालने वाली बात हो। मिलिट्री अपने सारे एडवेंचर को वो करने के लिए किसी न किसी सिविलियन को जो है किसी के ऊपर तो बात जाएगी, स्केप कोड जो है वो हमेशा बनाते हैं।
Now you must have come to know that how foolish was the thinking and planning of the Pakistan army. The vision of the Indian army and the government was miles ahead of Pakistan. As Air Marshal Asghar Khan had told Ayub Khan, India opened the front in Punjab and Rajasthan. जब इंडिया को खतरा नजर आया तो इंडिया ने फिर, बिकॉज आपने ये प्रोवोकेशन की थी, तो इंडिया ने फिर आपके लाहौर और सियालकोट सेक्टर के ऊपर फ्रंट खोल दिया, ताकि इंडिया के ऊपर जो प्रेशर कश्मीर में बन रहा था, जो आपकी वजह से, उसको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए उन्होंने यहाँ ओपन फ्रंट कर दिया। तो फिर जब फ्रंट खुला तो फिर आपको अपनी फौज भी भेजनी पड़ी, फिर आपने कश्मीर के अंदर अपनी फौज भेजी, क्योंकि टैंक टेरिटरी आपके फेवर में थी, आपके टैंक्स शामजोड़िया सेक्टर में निकल गए और वहां काफी कामयाबी हुई। मगर दूसरे सेक्टर्स में, राजस्थान और इधर नीचे वाले सेक्टर्स में, भावल में आपको नुकसान हुआ। Pakistanis thumb their chests and say that they have destroyed Indian tanks, made a graveyard for them, and have hundreds of destroyed Indian tanks there. So when there's a war, it is obvious that both sides have to suffer the loss. Yes, we suffered some loss, but your loss was definitely not less. You had better tanks than India, but in Khemkaran, the Indian tanks destroyed those tanks. We are not the ones who are saying it. Your fellow Pakistanis are saying so. यहाँ फर्स्ट आर्मर्ड डिव को लॉन्च कर रहे हैं खेमकरन में, वो आपकी एलीट एक थी, वो जाके वहां पे फंस गई। सबसे बड़ा जो हमारा फेलियर था वो फर्स्ट आर्मर्ड डिव का था, जो वहां पे जाके फंस गए और हम कोई मतलब ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू नहीं कर सके। हमने छेड़खानी की कश्मीर में, इंडियंस ने हम पे प्रेशर डाला। हाजी पीर पास जो अब तक हिंदुस्तान के कब्जे में है, हम वो वापस नहीं एक ले सके। उसके लिए हमने अखनूर वगैरह किया, वहां भी हमारा दिल जो है वो ठक ठक करने लग पड़ा, किया और वो हमने वो नहीं किया, वहां पे एडवांटेज नहीं कर सके। इंडियंस ने फिर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। From the mention of tanks, we remembered that we haven't talked about the Lahore incident. Many Pakistani viewers say that the Indian Army's desire to eat in Lahore remained unfulfilled. So on this matter, you should listen to what Air Marshal Noor Khan has said about Lahore. Lahore garrison, which was supposed to defend these things, they were on, the commander himself was on duty. So this is why I say that the whole thing was a total absurdity. लाहौर बिल्कुल अनडिफेंडेड था। उसकी वजह ये थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके, आपका ख्याल था अगर इंडिया कुछ करेगा भी तो कश्मीर में करेगा और वहां आप तैयार करके बैठे हुए थे। आपका ये ख्याल नहीं था कि इंडिया एक्चुअली इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा, और आप तैयार ही नहीं थे कि इंडिया इस किस्म का रिएक्शन करेगा। कि बीबीसी ने अनाउंस कर दिया कि जिमखाना तक, लाहौर जिमखाना क्लब जो आजकल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना लाइब्रेरी है लॉरेंस गार्डन में, जिन्ना गार्डन जिसे कहते हैं, उस वक्त लॉरेंस गार्डन जिमखाना था, और बीबीसी ने अनाउंस कर दिया कि हिंदुस्तान की फौजें लाहौर तक पहुंच गई। तो मतलब है कि फिर ये पता चला कि नहीं, हिंदुस्तान की फौजें आ रही थी, वो वहां क्योंकि डिफेंस कोई नहीं था, उन्होंने वो शक में आ गए कि शायद कोई ट्रैप तो नहीं है कि पाकिस्तान की नजर ही नहीं आ रहे डिफेंडर्स, फौज ही नजर नहीं आ रही है, और ये ना हो कि हम अंदर चले जाए, कोई ट्रैप और घिराव हो जाए। तो वो रुक गए सोचने लग पड़े कि यार ये क्या हो रहा है, नहीं तो वो तो बिल्कुल आधे घंटे के डिस्टेंस पे थे उनके टैंक्स। Ayub Khan found out that he has lost the war, so immediately he got ready to negotiate. Otherwise, Lahore would have gone. American ambassador taunted Ayub Khan. He said, Indians got you by your throat. It was an unfortunate war. It should not have been. Let's give you another proof of what happened in the war in Lahore. This is a newspaper of Pakistan named The Nation. An article was published in it with the heading 1965, How Pakistan Won the War of Propaganda. This article was written by Haider Imtiaz. His full name is Muhammad Haider Imtiaz. He is a renowned lawyer in Islamabad in Pakistan and practices in the High Court. In this article, Haider Imtiaz writes that most Pakistanis haven't even heard of the Pakistan Army's failed attempt to liberate Kashmir through Operation Gibraltar, which was launched a month before the Indians launched their attack on the Lahore front, or Operation Grand Slam, which was launched in order to relieve pressure from the line of control, which was then called the ceasefire line, as the Indian Army captured the strategic Kargil Heights and the Haji Pir Pass. This ignorance is for obvious reasons, for these events find no mention in the official narrative even to date, despite the fact that we live
in the much-touted information age. Haider Imtiaz writes further that with more than 4/5 of Pakistan's population being less than 50 years of age, most of today's Pakistanis weren't even born in 1965. Their knowledge of the war is almost entirely based on the distorted history taught in the official school curriculum or the propaganda narrative churned out by the military every year on the Defense Day. Look at these words in the article, which say distorted history taught in the school curriculum. Haider Imtiaz has also given reference of some authentic books about India-Pakistan war. He writes that the most comprehensive account, accompanied by detailed figures and maps, is available in his study. It was compiled by Lieutenant General Mahmood Ahmad in the form of a book named History of Indo-Pakistan War of 1965. Lieutenant General Mahmood Ahmad had served as the Director General of the Inter-Services Intelligence Directorate from 1999 to 2000. The book was originally named as Illusion of Victory, but was changed under pressure. This narrative is based on the war diaries of the battalions which participated in the war, interviews and briefings of the men who fought, and also contains a comparative analysis of the Indian official narratives and other versions. Apart from this, Imtiaz also talks about General Muhammad Musa Khan's account, who was the Commander-in-Chief of the Pakistan Army during the 1965 war. Compiled in the form of a book titled My Version. Based on the information in these books, Haider Imtiaz has further written in his article that in an attempt to prevent the fall of Akhnur, India launched an operation in Lahore and Sialkot. These fronts had been left completely defenseless, and Pakistani troops were surprised by an Indian attack. Following the Indian attacks on the Lahore and Sialkot fronts, Pakistan launched a counter-armor attack on the Kasur front, led by the elite 1st Armored Division. This counter-attack failed miserably. Pakistani tanks never made past Khemkaran and failed to enter deep into Indian territory. But this failure has not been mentioned in any school book of Pakistan, nor it has been mentioned in any other official document issued for the public. In the end, summing up the article, Imtiaz writes that Pakistan Army's performance in the 1965 war was marked by badly planned misadventures and strategic blunders on part of the High Command, which started the war in the first place. क्लॉजवेट्स की वो सेइंग है कि जी आप लड़ाई शुरू करने से पहले सबसे आप पहले अपने सवाल पूछे आप हासिल क्या करना चाहते हैं। उस लिहाज से अगर इस क्लॉजवेट्स की इस कोर्ट में हम देखें तो ये जो जंग थी ये गैर ज़रूरी थी और बेमकसद थी। कोई जो हमने अहदाफ जो विशफुल थिंकिंग पे वो प्रेमिसेस थे उनको हासिल करने के लिए हमने ये जंग शुरू की, वो हासिल हम नहीं कर सके। क्या कश्मीर आजाद करवा दिया? और कश्मीर आजाद करवाने का मतलब क्या होता है? आजाद कश्मीर का मतलब कश्मीर इंडिपेंडेंट कश्मीर होता है या पाकिस्तानी कश्मीर या इंडियन कश्मीर? So we too want to ask the Pakistanis, did you free Kashmir? As we have to prove by the end of this video that who won the war of 1965. 65 की जीती नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए। चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं। जंग जीती या हारी? नहीं, ये जंग जीती तो नहीं, क्योंकि जो आपका मकसद था कश्मीर लेना वो तो हुआ नहीं, जंग छिड़ गई और फिर इसके ऊपर फिर ताशकंद जाना पड़ा और वहां जाके एक पीस ट्रीटी या एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। तारिक अली साहब जो बड़े इनकलाबी स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने भुट्टो साहब को पूछा कि भाई ये जंग आपने क्यों की थी? ये इंडिया ने की, आपने की? उन्होंने कहा नहीं, हमने की थी, हमारा ये ख्याल था कि ये हो जाएगा और अगर हार जाते जो हुआ हमारे साथ, अगर हार जाते जो हुआ हमारे साथ डिबैकल हो गया तो मुझे पता था कि अयूब खान गिर जाएगा। Bad for Pakistan, but you had to accept it as a result of your losing or not the war that you managed to. But in fact, you had to stop the war because you were not. You couldn't have carried on much longer. The educated people, they know the reality of the war. They know that it was our fault. They know it was a mistake. And then we should admit it, I think, at this moment. And instead of celebrating it, we should recognize our mistakes. Actual आपकी नज़र में हुआ क्या और कौन जीता कौन हारा? असल में मैं भी ये दो लोगों पे इसको छोड़ता हूँ, एक हिस्ट्री पे और दूसरा खुद इन लोगों पे।
ठीक, लेकिन मैं आपको 2-3 बंदों के हवाले ज़रूर दूंगा जी, जिसमें एक एयर मार्शल नूर खान थे जो खुद इस वार के हीरो थे। अच्छा, उन्होंने खुद अपनी किताब में ये तस्लीम किया है कि जी। अयूब खान ने लोगों को मिसगाइड किया और हम ये जंग जीते नहीं हैं, बल्कि हमने ये बहुत बुरे तरीके से पूरा इशू जो है इसको मिस हैंडल किया। आप एयर मार्शल असगर खान की किताब उठा के देख लें, उनकी तहरीरें देख लें। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि इंडिया के ख़िलाफ़ सारी जंगें हमने स्टार्ट की और हम हारे हैं, कोई जंग हम जीते नहीं। मैं मिलिट्री वर्जन की बात कर रहा हूँ। ये मेजर जनरल आसिफ करीम की आप उठा के देख लें, अयूब खान की डायरीज़ देख लें और गुहर अयूब की तहरीरें भी देख लें। हम बाहर से किसी को लेते ही नहीं, जो उनका क्लोज सर्कल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा फेलियर था। उसकी वजह यह है कि ये मिस एडवेंचर था, मिस कैलकुलेशंस थी। These were Pakistani people who were telling how badly Pakistan lost the war of 1965. Many Pakistani viewers say that foreign media had talked about Pakistan's victory. So first of all, you should listen to this gentleman who is a high official of America. Then we will also tell you about the opinions of 3 renowned people of the world on the 1965 war. The Pakistani army has lost every war it's fought with India, from the original war in 1947 until the latest war in 1999. Now let us show you what the retired American diplomat Dennis Cox had said. He said that, although both sides lost heavily in men and material and neither gained a decisive military advantage, India had the better of the war. Delhi achieved its basic goal of thwarting Pakistan's attempt to seize Kashmir by force. Pakistan gained nothing from a conflict which it had instigated. British historian John Kay writes that the war lasted barely a month. Pakistan made gains in the Rajasthan desert, but its main push against India's Jammu-Srinagar road link was repulsed and Indian tanks advanced to within a sight of Lahore. Both sides claimed victory, but India had most to celebrate. American writer Stanley Walpert writes, the war ended in what appeared to be a draw when the embargo placed by Washington on US ammunition and replacements for both armies forced cessation of conflict before either side won a clear victory. India, however, was in a position to inflict grave damage to, if not capture, Pakistan's capital of the Punjab when the ceasefire was called and controlled Kashmir's strategic Uri-Punch bulge. So friends, this was our report on the war of 1965 with full evidence. We know that Pakistanis will not be able to digest all these evidences, but this is the truth and you can't deny it. You can call it a lie or call the Pakistani people giving true statements as traitors, but the truth will always remain the truth. Friends, please write in the comment box whether you like this video or not. We request you to kindly subscribe to our channel and please share the video as much as possible so that everyone can get to know the truth. We will be back soon with another video. Till then, goodbye. Jai Hind.